Hello, 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 hello. Is the voice clear, guys? Please give me confirmation in the chat box. ओके चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपने इस आज के डिक्टेशन को. टुडे विल बी कवरिंग लीगल मैटर. आज का थोड़ा डिक्टेशन बड़ा होगा, सो यू कैन से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्लासेस. ठीक है, दो क्लास को एक साथ कंबाइन करके हम आपको डिक्टेशन दे रहे हैं यहीं पर. ठीक है, चलो get ready guys for the dictation. Dictation starts in 5 seconds. Steno School, legal matter. 3, 2, 1, start. The division bench of the High Court, comma, wide its order dated 7th October, comma, 2002, comma, allowed the appeal of the state government and dismissed the suit of the appellant firm, and also directed that the decretal amount deposited by the state government and as permitted to be withdrawn by the firm should be refunded within a period of 4 months from the date of judgment. Being aggrieved by the said judgment, the appellant firm has filed this appeal by way of special leave petition before this court, who heard Mr. Altaf Ahmed, comma, learned senior counsel for the appellant, and Mrs. Madhavi Diwan, comma, learned counsel for the respondent state. Stop. Though the trial court, after accepting the claim of the plaintiff, granted a decree to the extent of rupees 2,27,000 with proportionate costs and interest at the rate 6% per annum from the date of the suit till realization, comma, in the appeal filed by the state after finding that the plaintiff was stopped from claiming damages against the department as the final bill was accepted, comma, the High Court allowed the appeal of the state and dismissed the suit of the plaintiff. Stop. The High Court non-suited the plaintiff mainly on the ground of clause 8 and 10 of the agreement and of the fact that the final bill was accepted by the plaintiff under protest. Stop. In view of the same, comma, it is relevant to refer clauses 8 and 10 of the agreement, which are as follows: colon, inverted comma open, clause 8 dash, no payment shall be made for any work estimated to cost less than rupees 1,000 till after the whole of the said work shall have been completed and a certificate of completion given. Stop. But in the case of work estimated to cost more than rupees 1,000, the contractor shall
on submitting a monthly bill, therefore be entitled to receive payment proportionate to the part of the work then approved and passed by the engineer in charge, whose certificate of such approval and passing of the sum so payable shall be final and conclusive against the contractor. All such intermediate payments shall be regarded as payments by way of advance against the final payments only, and not as payments for work actually done and completed, and shall not preclude the engineer in charge from requiring bad, unsound, imperfect or unskillful work to be removed and taken away and reconstructed or re-erected, nor shall any such payment be considered as an admission of the due performance of the contract or any part thereof in any respect of the occurring of any claim, nor shall it conclude, determine, or effect any way of the powers of the engineer in charge as to the final settlement and adjustments of the accounts of otherwise or in any other way vary or affect the contract. The final bills shall be submitted by the contractor within 1 month of the date fixed for completion of the work, otherwise the engineer in charge (S) certificate of the measurement and of the total amount payable for the work shall be final and binding on all parties. A bill shall be submitted by the contractor each month on or before the date fixed by the engineer in charge for all work executed in the previous months, and the engineer in charge shall take or caused to be taken the requisite measurement for the purpose of having the same verified, and the claim, so far as it is admissible, shall be adjusted, if possible within 10 days from the presentation of the bill. Stop. If the contractor does not submit the bill within the time fixed as aforesaid, the engineer in charge may depute a subordinate to measure up the said work in the presence of the contractor or his duly authorized agent, whose counter signature to the measurement list shall be sufficient warrant, and the engineer in charge may prepare a bill from such list which shall be binding on the contractor in all respects. Full stop. ऑलराइट गाइस, ये था आपका 95 वर्ड्स पर मिनट का डिक्टेशन. कैसा लिखा गया बताइए. ठीक है, इसको मैंने यहीं तक रखा मैटर को. ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हमने पूरा कट कर दिया. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हमने इसको यहीं तक रखा है. ठीक है, देख लो कितनी अच्छी ड्राइंग कर रहा हूँ मैं. ठीक है. चलिए गाइस, कैसा रहा ये मैटर बताइए. और जो भी आप लोग के अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, आपके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आपका राजस्थान हाई कोर्ट, आपका दिल्ली हाई कोर्ट, आप कोई भी हाई कोर्ट का नाम ले लो, हर एक स्टेट गवर्नमेंट की जो भी हाई कोर्ट्स होते हैं वो सभी में
इसी तरह के मैटर्स आते हैं, आप लोग जब इन्हीं मैटर्स की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बहुत अलग मैटर आता है, बस मैटर्स की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, लीगल डिक्टेशन लिखना आपको आना चाहिए, और जितनी स्पीड बोली है, अगर आपको एग्जाम में 80 की स्पीड बोली है, ठीक है, 80 WPM स्पीड रिक्वायर्ड है, तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, कम से कम 95 से लेके 100, 95 से 100 WPM आपकी स्पीड होनी चाहिए, तभी आप उस एग्जाम में कुछ बढ़िया कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर लीगल एग्जाम के लिए जा रहे हो तो एक बात याद रखना, दैट आपकी टाइपिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल गाइज आज की इस क्लास के लिए। जिन्होंने भी डिक्टेशन लिखा है, आप लोग बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हो कि क्या रहा आपका स्कोर, कैसा रहा आपका पूरा ये डिक्टेशन, एंड वी विल एंड द क्लास राइट नाउ। बाकी आपको कोई भी डाउट है, यू कैन सेंड अ मैसेज, आप यहीं पे भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी पढ़ो अच्छे से और डिक्टेशन लिखो अच्छे से, प्रैक्टिस करो, ट्रांसक्रिप्शन करो, एंड अगर सीरियस हो एग्जाम के लिए देन यू शुड हाईली कंसिडर जॉइनिंग द स्पीड बैच। ओके, चलो।